Okay, so namaskar all of you. So आज जो हमारा टेस्ट थिला तार डिस्कशन टा करिवा. All of you have the questions with you, so we will discuss that in detail. तो इटा बेसिकली हमारा कॉन्ट्रैक्ट रो ऑफर और एक्सेप्टेंस को कवर करूची. आउ जो 8टा इंपोर्टेंट केसेस हमें पढिथिलु केस लॉस ऑफर और एक्सेप्टेंस रो सेही 8टा भितर 6टा केस लॉस ऊपर क्वेश्चंस अछि. ओके, जेहेतु आमे डिटेल्स से केस लॉ गुडा ऑलरेडी कवर करि सारछु. मु आउ केस लॉ को जिबिनी केवल बिकॉज़ वी नो द केस लॉस. ओके, केस लॉ रो डिटेल्स हमें जानिछु. एबे खाली कोन क्वेश्चंस ता ऊपर पडछि सेडा गोटे गोटे करे डिस्कस करिबा. ओके, तो फर्स्ट केस ता फर्स्ट पैसेज ता देछि 10टा क्वेश्चन. तो 6टा केस लॉ अछि. सबु केस लॉ ऊपर 10-10टा क्वेश्चन अछि. ओके, सो पैसेज 1 रो जो केस लॉ देछि दैट इज दिस लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. ठीक अछि. तीटा पॉइंट हम एथर देखथिलु. कोन प्रथमटा हला कि जदि ऑफर रो जणा नाही ताहले एक्सेप्टेंस रो जदि रिवार्ड किछि गोटे भी थिबो ताहले भी सेटा आपन को मिलि परिबनी. नंबर 1. सेकंड हला जदि गोटे ऑलरेडी आपन कोनोसी प्री डिटरमाइंड ओके ऑब्लिगेशन रे बंधा ही चंदी ताहले सेथरे आउ किछि आपन को एक्स्ट्रा किंबा आपन किछि रिवार्ड की से टाइप रो क्लेम करि परिबे. सो दिस वी हैड ऑलरेडी सीन. नाउ कम टू द क्वेश्चंस. ओके, इन द लालमल शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त केस, what is the primary reason the plaintiff was not entitled to claim the reward? हला एठी जजमेंट रो ऑपरेटिव पार्ट ता दिया हिच. ओके, तो से थ्रू पढ़ी की भी अपन बाहर कर परिबे. बट जेहेतु हम ताको डिटेल रे डिस्कस करिचु तो अपन ओके आंसर ता अपन सही हिसाब रे कहि परिबे. कोन कोन आंसर देइचंती समस्ते जस्ट लेट मी नो व्हाट विल बी द आंसर. जो माने कहितले अपन को सारी दबा पई आ भितरे तेनु एक्सक्यूज मी जो माने देइचंती यार आंसर ता ताले मते कोंतु कोन तार आंसर हबो. ओके, ऑप्शंस देखंतु. फर्स्ट ऑप्शन देला the plaintiff did not perform the search. Okay, एटा भूल हमें जानछु. plaintiff search भी करिथिले. ओके, जाइथिले भी हरिद्वार तेनु that is wrong. The reward was not communicated to the plaintiff. Okay, reward was not communicated to the plaintiff. तो reward in the sense कि तक से ऑफर तो से जानी नथिला. he did not know of the offer. से पाइसारी की पिला को आनी की फेरेला परे ऑफर रे जानला. रिवार्ड वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू द प्लेंटिफ. एटा टेक्निकली ठीक अछि, किछ असुविधा नहीं. ओके, दिस इज करेक्ट. रिवार्ड वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू द प्लेंटिफ और द ऑफर वाज नॉट कम्युनिकेटेड टू द प्लेंटिफ. दिस एक्चुअली इट इज करेक्ट. क्वेश्चन किंतु कोन पचारछि प्राइमरी रीजन ता कोन. तले अलगा ऑप्शंस भी देखि दबा. Plaintiff already had a pre-existing obligation to search for the boy. अपन जदि operative part of the judgment ता पढ़िबे सेतरे clearly judge कहउचंदी कि although एटा तारो normal course of employment रु बाहर थिला किंतु सी agree कला हां मु जाई कि ताको खोजि कि आनी. ओके, सो pre-existing obligation से already create करि देइथिला तेनु ता पई आउ एक्स्ट्रा पैसा ताको किछि रिवार्ड हरिका ओके से एलिजिबल हबनी. The plaintiff already had a pre-existing obligation to search for the boy and the plaintiff was not in a contractual relationship with the defendant. ठीक है. So आ भितरु B is correct, C is also correct. Primary reason ता कोन रहइबो that is C. Plaintiff already had a pre-existing obligation to search for the boy. But B is also not wrong. किंतु क्वेश्चन हला प्राइमरी रीजन ता कोन. ओके, बुझि पाले. ऑल ऑफ यू गॉट इट करेक्ट. जो माने देइचंती आपनकर एग्जाम ता ना अलगा कोन आंसर देइचंती. सम ऑफ यू हैव गिवन बी. यदि बी देइचंती आंसर देन इट इज ठीक अछि. आपनकर कंफ्यूज हे गले कना बी रे जा कोइ छी सेटा भी ठीक. ए केस ता हम कोन पई पढु को हेडिंग रे पढु कि आपनकर ओके जदि ऑफर ता दिया हिनी प्रपोजल ता दिया हिनी जण ठीक अछि तो एक्सेप्टेंस रो क्वेश्चन ही नहीं. और एक्सेप्टेंस परे तो रिवार्ड ता अछि कि तारो जहां भी कॉन्सिक्वेंट जहां भी हबो
तो सेठी आउ किछि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हबार संभावना ही नहीं जेहेतु ऑफर ही ताकू दिया है ओके सो जदि बी टाकू भी आपण आंसर करिसंती तले ठीक अछि कांसेप्ट टिके टिके आपण बुझिसंती बट क्वेश्चन टा प्रॉपर्ली देखिबे से कोन पचारुछि से पचारुछि प्राइमरी रीजन टा कोन व्हाट इज द प्राइमरी रीजन ओके सो मार्क द आंसर एज ओके सी ठीक अछि सी को आंसर हिसाब रे मार्क करंतो मार्क द आंसर एज सी ओके लास्ट रे सब 60 टा सरले लास्ट क्यू कार केते कोन हितला ग्रुप रे दे देबी सही हिसाब रे आपण यू कैन गिव योर पोल कार केते कोन आछी आउ एटा ना नेगेटिव मार्किंग भी करिवे एमति तो नाही कि आउ जा ठीक अछि ओके जस्ट लाइक हमर ओजेएस रे एथरे हमर ओजेएस रे कोन आपनकर 90 मिनिट्स रे 100 क्वेश्चंस पडछ क्लैट पीजी रे 120 मिनिट्स रे 120 क्वेश्चंस पडछ सेम 1 मार्क आपनकर करेक्ट आउ जदि भूल होची 0.25 माइनस हो हैला सो सी इज द आंसर अच्छा आउ गोटे कथा हला क्लास पर ऐप रे देखिबे आपनकर जो डिटेल सॉल्यूशन ता थिबो से सॉल्यूशन टा टिके पढी देबे ठीक अछि तो से सॉल्यूशन रे आउरी डिटेल्स गुडा दिया है जी काहे कि ए पर्टिकुलर चॉइस टा हैला ओके तो सेटा को भी आपन को देखि देबार अछि सो कीप दैट इन माइंड आल्सो ओके आफ्टर द क्लास यू कैन गो थ्रू दैट आपनकर जो रेस्पेक्टिव फोल्डर्स रे सेटा थिबो तो क्वेश्चन 1 आंसर इज सी ठीक अछि anything anyone wants to ask each kind of doubt jodi achi then you can ask else we go to question 2 question 2 pasandu why did the court in Lakshman Shukla versus Gauri Datta emphasize the concept of communication of offer okay communication of offer so because the plaintiff did not fulfill the conditions of the reward this is wrong fulfill call or nahi kiya asla because an offer must be accepted with knowledge of terms to create a contract because the plaintiff's acceptance was not communicated back to the defendant because offers are invalid unless communicated to third parties so avituru you know okay B will be the correct answer an offer must be accepted with knowledge of its terms to create a contract okay ethi se jani hi nathila ki kon gote emti offer bi achi okay तो एमती गोटे कहीं सी हरिद्वार बाहरला परे ओके तांकर मास्टर जी से एई कथाटा को आणले कि जे ताको फेरे दबो मो नेफ्यू को तो मो ताको 500 एक ना 900 एक से जा भी से कहिदिले सेति के अमाउंट देबे बुझ परले so in this case for this particular question your answer will be B question 2 because an offer must be accepted with knowledge of its terms to create a contract now come to question 3 which legal doctrine is most applicable in the reasoning of court in Lalman Shukla versus Gauri Datta regarding the invalidity of reward claim कौन पाई रिवार्ड टा ताकू दिया हबन दीटा जिंस थिला एतरे बट ऑप्शंस को जदी हमें देखिबा ओके कंसेंसस ad idem doctrine of privity of contract doctrine of consideration किंबा quantum merit okay which of these will be the answer so एथरे आपनकर देखंतु doctrine of consideration okay that is important कि जदि आपनकर किछि प्री एक्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन अछि तो सेठी आउ कंसीडरेशन रो ओके इंपोर्टेंस ता किछि रहिबन राइट सो सी वुड बी द आंसर दैट इज योर डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन ओके क्वेश्चन नंबर 3 रो आंसर इज सी डॉक्ट्रिन ऑफ कंसीडरेशन तापरे क्वेश्चन 4 को आसंतु in the Lalman Shukla case what condition was missing for formation of valid contract legality of object communication of the offer competency of parties and certainty of terms okay so
this will be your कौन हम एटा टू पार्टी आपणकर ओके ऑफर दौची तो आर पार्टी सेटा प्रॉपर्ली जानिबा कथा ठीक अछि ऑफर टा आपण प्रॉपर्ली कम्युनिकेट करिवे जदि से ऑफर टा जानिनी ओके ताले एक्सेप्टेंस रो क्वेश्चन ही नहीं राइट सो B will be the answer communication of the offer right next question 5 के असंदो what legal principles does the case of Lalman Shukla versus Gauri Datta establish about rewards and contracts okay so first rewards are enforceable even if unknown to the claimant okay एटा फर्स्ट आपनकर ऑप्शन देला प्री एक्जिस्टिंग ऑब्लिगेशंस इनवैलिडेट क्लेम्स फॉर रिवॉर्ड्स ए रिवॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट्स ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट वंस ऑफर्ड ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अनएनफोर्सेबल सो ऑलरेडी हमें देखि जो एटा कि प्री एक्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन जदी अछि ओके ताहले अब आपण रिवॉर्ड घरिका क्लेम करि परिबे नाही ओके सो बी विल बी द आंसर that if you are having pre-existing obligations then you cannot claim a reward okay so B will be the answer right pre-existing obligations invalidate claims for rewards ebe question 6 ko asantu what type of contract was being contested in Lakshman Shukla versus Gauri Datta ko type ro contract to types of contract bi asi gala etere bilateral quasi unilateral की executory so basically गौरी दत्त से गोटे जनरल ऑफर करथिले मो नेफ्यू को जे नै कि आसियो मो एतिक टंका देई देबी ठीक अछि सो इट वाज अ यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट तांको साइड रु से करथिले जे ताको ऑफर को यू नो जनरल ऑफर थिला तो जे तार टर्म्स एंड कंडीशंस को मानिबो इटी टर्म्स एंड कंडीशन कोन थिला मो नेफ्यू को फेरे देबो जे फेरेला ताको पैसा मिलिबो specific contract eta nathila general contract thila ठीक अछि so C would be the answer for question number 6 unilateral contract because it was only made from the side of Gauri Datta it was a general offer made to the world okay ki mora nephew ke fere ki anibo right so C would be the answer now come to question 7 ta be dekhandu okay so again it tells you how does Lakshman Shukla versus Gauri Datta impact the interpretation of consideration in Indian contract law? One options देछि it broadens the scope of valid consideration. Simply किछि नहीं. Okay. कहना valid consideration को तो case जाई नहीं. Okay. Consideration ही सेठी रहिलानी बोली कोर्ट को कहवा कथा काहे ना pre-existing obligation थिला. It restricts pre-existing duties from serving as consideration so it is a coil it allows rewards to bypass the need for consideration it treats consideration as irrelevant in reward cases so B would be the answer it restricts pre-existing duties from serving as consideration okay tapare question 8 ko asandu in Lalman Shukla versus Gauri Datta which of the following best describes why the reward offer was unenforceable okay was unenforceable so first option hala the plaintiff's actions were not within the scope of his employment okay that is correct seta directly judge bhi कहइछथि कि ता scope भीतर नथिला किंतु सेटा एग्री करथिला the plaintiff's actions were not within the scope of his employment ठीक अछि तापरे the plaintiff performed the act before the offer was communicated to him एटा ठीक अछि से ऑलरेडी पिला को आनी की देसर थिला ता परे जानला कि एमती गोटा ऑफर कराइछ the plaintiff failed to comply with the terms of the reward offer that is wrong terms of the reward offer कोन थिला कि आपण पिला को फेरेबे से फेरै छनी the reward offer was not specific enough to create a contract no it was a generic offer okay but it was specific it was certain that je ferebo taku 500 ki 900 टका दिया ठीक अछि
So आ भितरु B is the correct answer. The plaintiff performed the act before the offer was communicated to him. जेतेबेले से पिलाटा को नहीं कि आसी कि हरिद्वार रु ताको धरी कि ताको पाई कि आनी कि इटी देले से जानी नथिले कि एमतिटा ऑफर अछि. Okay, so question 8 B would be the answer. Now come to question 9. What distinction did the court make between voluntary actions and actions performed under duty in the Lalman Shukla versus Gauri Datta case? Okay, voluntary action mane swechare jane kochi. Okay, and the actions under duty. ठीक अछि. जोड़ा कि से duty bound से तारा already obligation अछि. So see the options. Voluntary actions are enforceable even without consideration. ठीक अछि. So question पचारुछि. Okay, which distinction did the court make? तो एमती किछि कोर्ट कोइ नांती. Actions performed under duty cannot serve as valid consideration for a promise. This the court has said. Okay, बाकी उड़ा भी देखिए तो voluntary actions do not require communication of the offer. नहीं सेमती भी नो. Okay, actions performed under duty are enforceable only if explicitly mentioned in the offer. Okay, that is also not correct. Okay, means not correct in the sense that court कौन कहिचंदी. Okay, ता विषय में कहूँ. What distinction court has made? So B is the answer. Actions performed under duty cannot serve as valid consideration for a promise. Next, last question, a passage, a case. How does Lalman Shukla versus Gauri Datta clarify the role of employment relationships in contract law? जो employment दरम तो अपनंगरा master servant relationship है. Okay, ता ऊपर कौन light से पकोच. So these are your options. Employers are bound to reward employees for all tasks performed during employment. Employees cannot claim rewards for acts performed under the scope of their pre-existing duties. This is correct. This is what is the crux of that case. So B would be correct. C or D, we can go through. Employees are entitled to claim reward only if the reward offer is communicated through formal channels. Employment relationship do not affect the enforceability of unilateral offers. So B would be the correct answer. Okay, so it is case number 1. Right? First question, Lalman Shukla versus Gauri Datta. Any doubts in these questions? Then you can ask. Else we will go to the second case. Okay, that is McPherson versus Aparna. Okay, so come to question 11. In McPherson versus Aparna, what was the primary reason the court ruled that there was no concluded contract? Okay, the offer was not communicated to the first defendant. There was no acceptance of the first defendant's counter offer. Young man failed to act as a neutral intermediary. The plaintiff withdrew the offer before it could be accepted. Okay, तो इटा already हमें देखी चु, but मैं still got a छोटा synopsis बढ़िया कर दूँगी. तो इटा भी Supreme Court of India रा case टा. इतरे कौन इतला ना गोटे British officer McPherson जी की बाहर रहूतिले, तांकर गोटे property थिला. Okay, India रे. आउ सेटा तांकर जे state manager सेठी थिले, young man से ताको तारो care से नोते. तेणु जने जो अपना ये चाहूले सेटा किनिया पे से ऑफर कले मु 6000 टका रे किनिबे. तो यंग मैन कोन कले टेलीग्राम थ्रू रु मैकफरसन को जणैले कि ये कहउछन 6000 रे किनिबे. मैकफरसन रिप्लाई कले, यंग मैन को रिप्लाई कले कि 10000 रु कम रे मु बिकिबे. ठीक अछि. तो अपना को जणैले यंग मैन. तो अपना से हिसाब रे से ओडे निजे जा भाबी कि ओडे एक्सेप्टेंस लेटर ओडे देले कि हाँ मु एक्सेप्ट करूची अपन ऑफर टा 10000 टंका रे मु किनि देबी. ओके,
बट सेटा ये कहि नथले को 10,000 टका बिकिबी ये कहले 10,000 टका मु तार तळकु बिकिबी ओके सो से जाऊ तापर ये भाबी कि रहले कि हां एटा मते ही बिकिबे बट आउ जणे लोक आसिले से कहले मु 11,000 टका रे किनिबी तो तांकु सेटा बिका गला ओके अपन एटले जानले ही वेंट टू कोर्ट तेणु कोर्ट को सामने रे क्वेश्चन आया थिला कि तांको भीतर किछ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन अछि ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रा कहउचंदी कॉन्ट्रैक्ट हेछि कोर्ट कोन डिसाइड करले कि जेतु क्लियर ओके आपनकर एक्सेप्टेंस नथिला ओनर कोठू मैकफरसन कोठू ओके अपन जो कहले मु 10,000 रे किनिबी सी आपन को ऑफर दे नथले 10,000 ठीक अछि सी कहले कि सेटा मिनिमम सो सेठी गोटे बेसिक रूल आपे देखिछु कॉन्ट्रैक्ट रो कोन ना जतोडे मिनिमम प्राइस को आउची गोटे जिंसर सेटा हला एन ऑफर ओके invitation to offer or invitation to treat not an actual offer ठीक है so this is the basic of the case now come to the first question in McPherson versus Appanna okay so what was the okay kon basically taro just see that in McPherson versus Appanna what was the primary reason the court ruled that there was no concluded contract okay so options dekhantu the offer was not communicated to the first defendant there was no acceptance of the first defendant's counter offer se jo कहला ठीक अछि 6000 नहीं मु 10,000 रे किनिबी ओके तो ये तो किसी yes की नो ही करना मैकफरसन or through his agent that is young man सेवन किछ करना okay so B would be the answer for question number 11 okay there is no acceptance of the first defendant's counter offer question 12 को आसुंदु बे why did the court not consider the plaintiff's statement confirming the oral offer as an acceptance of counter offer okay kahi na the statement was ambiguous the counter offer was not communicated properly plaintiff's statement was addressed to the wrong party the oral offer was made after the counter offer so A would be the answer the statement was ambiguous clear nathla seta it was ambiguous okay so A would be the answer for question 12 now come to question 13 what principle of contract law did the court rely on to rule that no transaction could be concluded without the first defendant's express assent doctrine of implied term principle of acceptance and assent rule of intention to create legal relations or doctrine of past consideration so abhi B is correct okay B would be the correct answer that is principle of acceptance and assent okay acceptance au assent ro okay the rules achi should be clear okay without any ambiguity certain hoba kotha ei सब jinso oda ethar rahibo so B would be the answer principle of acceptance and assent now come to question 40 how did the court interpret young man's role in the negotiation process court kon कहले तो एटा passage पढले ही जणा पड़ जिवो as a neutral agent acting in good faith as a biased party favoring the rival bidder as an independent party with no influence on the transaction as a party acting beyond the scope of his authority okay so what the court said as a neutral agent acting in good faith right kahi ki na apan dekhibe young man kon kale prathame अपन ना तो डायरेक्टली मैकफरसन को तांकर ऑफर टा दे नथले ना सी यंग मैन को कहले यंग मैन टेलीग्राम रे पठेले ताको मैकफरसन को ठीक अछि जा ये कहतले एक्जेक्टली से तेनु एंड लेटर ऑन आल्सो ओके जैसे किसी 10,000 टका पई कहउचंती कि 10,000 टका रे करिवे तो व्हाटएवर ही हैज सेड से तक निज आडू किछि एपट सेपट करना तो एज ए न्यूट्रल एजेंट एक्टिंग इन गुड फेथ ओके 14 रो आंसर ए हबो नाउ come to question number 15 so question 15 ta dekhantu what does McPherson versus Appanna case highlight about the role of intermediaries in contract formation
Okay, role of intermediaries in contract formation. So first option dekhantu, intermediaries can bind parties to a contract without their explicit consent. Seta no. Intermediaries must remain impartial to ensure fairness in negotiation. This is correct. We have answer. Okay. Olga oda bhi dekhi diyantu. Intermediaries can override the condition of offer. Intermediaries are unnecessary for contract formation. वो जगह contract में intermediaries दरकार, agents दरकार. जंती के ई case रे जोड़ी owner बाहर रोचंती, किंतु से तंगरा estate agent को कोई जंती से तंगरा manage करचंती estate. So intermediaries must remain impartial to ensure fairness in negotiation. So B would be the answer for question 15. 16 के बैसन दो. In contract law, what does the court's decision in McPherson versus Aparna imply about counter offers? Okay, a counter offer is binding even without acceptance. A counter offer automatically concludes the original offer. A counter offer requires explicit acceptance to form a binding contract. A counter offer is invalid unless it is communicated in writing. Okay, so counter offer, ठीक है. गोटे कथा तो है कि काउंटर ऑफर विल नलिफाई द ओरिजिनल ऑफर, सेटा ठीक अछि. ओके, बट द क्वेश्चन इज से जोटा दउछि कि डज इट कंक्लूड ए कॉन्ट्रैक्ट. ओके, काउंटर ऑफर ऑटोमेटिकली कंक्लूड्स द ओरिजिनल ऑफर, ठीक अछि. सो इट डज नॉट कंक्लूड इट, इट फिनिशेस इट, सेटा ठीक अछि, बट इट डज नॉट कंक्लूड इट. A counter offer requires explicit acceptance to form a binding contract. Eta correct. कि counter offer को explicitly, okay, ताको accept करिवार अछि, ताको approval दबार अछि. Then only binding contract will be formed. When a counter offer is made, original offer comes to an end. किंतु एटी कौन को होछि? Concludes, automatically concludes. तेनु B टा हबन. तो के जण B भी अपन लिखिथिबे, ताले wording of the questions टा भी टिके भलरे देखिबे. कहना सेटा लागु कि हां बीटा ही हबो, बट से पचाउछि automatically concludes, okay, ends the offer से लेखुनी, automatically concludes the original offer. So एटी offer टा automatically, okay, आपनकर कोन सेटा cancel out हे जाउछि, right, बंद हे जाउछि सेट. But answer would be C. Counter offer requires explicit acceptance to form a binding contract. Okay, now come to question number 17. What is the legal effect of a counter offer according to the court in McPherson versus Aparna? Legal effect. It creates a binding agreement. It acts as rejection of the original offer. Hela, rejection of conclusion. ए दिटा भितर आपनकर डिफरेंस टा जानिबार अछि. So this is correct. जदि काउंटर ऑफर दियाला, ओरिजिनल ऑफर टा रिजेक्ट हे गला त मन. So it acts as a rejection of the original offer. बाकी भी देखि दबा. It can be accepted implicitly without communication, not possible. It revives the original offer. Revives the original offer? No. It terminates the original offer. Okay, so B, or rejects the original offer. So B will be the answer for question 17, that it rejects the, okay, original offer. Now come to question 18. So in context of McPherson versus Aparna, why was the plaintiff's claim for breach of contract dismissed? The plaintiff did not fulfill the terms of contract. There was no concluded contract between the parties. Valid contract. The first defendant rescinded the offer before acceptance. The terms of agreement were too vague. Okay, so B would be the answer. There was no concluded contract between the parties. So breach of contract questioning 49. Okay. Question number 18, answer is B. Next, come to question 19. Question number 19 देखो. What does McPherson versus Aparna
judgment highlight about the nature of an invitation to offer? It is binding upon acceptance. It constitutes a valid offer that can be accepted immediately. It is mere solicitation for offers and not an offer itself. It has no legal standing in contract law. C would be correct. It is only solicitation for offer. Examples है एमती आपण जाउचंदी रेस्टोरेंट को मेन्यू देखुचंदी. ओके गोटे सेल्फ सर्विस जोटा की नेक्स्ट केस टा अछि. ओके दैट इज the pharmacy board, okay, of Great Britain, and okay, the goods cash company. So that display boards re seven medicine display करथले. Okay, so will that constitute an offer? तो कोर्ट कहले नहीं सेटा हला invitation to offer. किंबा mercantile law रे invitation to offer को more technically it is called invitation to treat. ठीक अछि. So C would be the answer. Question 19, that is C. It is a mere solicitation for offers, not an offer itself. Okay, invitation to offer or invitation to treat. Last question, a case law. Question number 20 question. How did the court interpret the correspondence between the parties in Macpherson versus Apanna? Okay, so as evidence of concluded contract concluded. Okay, as ongoing negotiations without mutual assent, as binding agreement based on implied terms, as a proof of breach of contract by first defendant. So B will be the answer. It was basically invitation to offer. Okay, mane preliminary negotiation stage re seguda sabu thai invitation to offer. Okay, so as ongoing negotiations without mutual assent, to sta bhitar kar agreement to henotla na ho ame etikre kinibu ame etikre bikibu se type lo kichi. So as ongoing negotiations without mutual assent, B will be the answer. ठीक अछि. आपनकर last question of this particular case law, passage 2 law, as ongoing negotiations without mutual assent. Now come to question 3. So this is basically Harvey versus Facey. Okay, it is simply related to apanangara invitation to offer. Okay, so Harvey was basically he was a customer जे गोटे प्रॉपर्टी किनिया पे चाहूले. फेसी थिले प्रॉपर्टी डीलर जे बिकु दिले प्रॉपर्टी. सो व्हाट हार्वी डिड से गोटे पठेले कि मते ही अमुक प्रॉपर्टी किनिबार अछि, आर मिनिमम प्राइस ता केते मिनिमम रे आपण बिकि परिबे. तो फेसी तापर ताको रिप्लाई करले सब टेलीग्राम रे कि ओके टेलीग्राम माने आगुर जो पोस्ट रे थिला टेलीग्राम हला टेलीग्राम ऐप राइट. तो टेलीग्राम रे रिप्लाई करले कि नहीं तार मिनिमम टा है एतिकी. ठीक अछि मिनिमम टा. तो हार्वी भाबिले कि सेटा से ऑफर दोचंती सी तांको लेके देले ठीक अछि मु सेतिकी रे किनिबे. फेसी मना कले कि नहीं मु तो कहनी सेतरे बिके मु कहले एटा मिनिमम. तो हार्वी स्यूड फेसी. ओके, तो कोर्ट को पाखरे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रो ओके तो कोर्ट करो से डिसाइड करिया से ता भीतर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट हेछि कि नहीं. सो कोर्ट आल्सो रूल दैट कि आपणकर जो कोटेशन किंबा मिनिमम प्राइस जेतले कुआ होची सेटा ऑफर नो सेटा इनविटेशन टू ऑफर किंबा प्रिलिमिनरी नेगोशिएशन रो गोटे पार्ट. ओके, सो दिस वाज द केस ऑफ हार्वी वर्सेस फेसी. देखो सेटा क्वेश्चन 21. In the case of Harvey versus Facey, why did the court rule that there was no concluded contract? The seller's response was a counter offer. The buyer's acceptance was not communicated effectively. The seller's response was an invitation to treat, not an offer. The buyer failed to meet the condition of seller's offer. So C answer. The seller's response was an
invitation to treat. Okay, invitation to offer. That was not an offer in itself. So C would be the correct answer for question 21. Now come to question 22. So the question 22. What principle of contract law does Harvey versus Facey case emphasize regarding statements of price? A statement of price is always an offer. A statement of price can bind the seller if the buyer accepts. A statement of price is an invitation to treat, not an offer. A statement of price is irrelevant to contract formation. C would be the answer. Statement of price is an invitation to treat, but not an offer. Okay, so C would be the correct answer for 22. Tabare, question 23 ke asan. Why did the court reject the appellant's argument that the seller's response implied a willingness to sell? Okay, the seller explicitly refused to sell the property. The seller's response was ambiguous. The seller's response did not answer the first question regarding willingness to sell. And the buyer's offer exceeded the stated price. So see कोठी भी कहीं नंदी, फेसी कोठी भी कहीं नतले कि मु आपण को minimum price रे बिकी भी सी पचरले Harvey asked minimum price केते ये कहले ए आला minimum price. Okay, he never said that I am going to sell you at the minimum price. So C would be the correct answer here. It is C ta apanakara correct answer rahib. The seller's response did not answer the first question regarding willingness to sell. Now come to question 24. What does Harvey versus Facey case illustrate about the nature of acceptance in contract law? Acceptance must match the terms of offer without modification. That is correct. सेटा बहुत इंपोर्टेंट जदि आपण मॉडिफाई कर दोचंदी ऑफर टा को तल तो काउंटर ऑफर हे गला सेटा ठीक अछि तनो आपण जदि एक्सेप्ट करचंदी फुल्ली एक्सेप्ट करिवे नो इफ नो बट्स ओके एक्सेप्टेंस मस्ट मैच द टर्म ऑफ ऑफर विदाउट मॉडिफिकेशन दिस इज करेक्ट अब बाकीडा भी देखि दो एक्सेप्टेंस कैन क्रिएट ए कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ द ऑफर इज एम्बिगियस ओके ऑफर एम्बिगियस हेले वैलिड ऑफर होबनी एक्सेप्टेंस बाइंड द ऑफरर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर इंटेंशन ओके इंटेंशन जदि कॉमन इंटेंशन नथिबो ताले भी ओके गोटे लीगल रिलेशनशिप रे पसिबा पई ताले भी वैलिड ऑफर होबनी सेटा एक्सेप्टेंस कैन ओवरराइड एन इनविटेशन टू ट्रीट ओके दैट इज आल्सो रॉन्ग ए वुड बी करेक्ट ठीक अछि ए इज द आंसर फॉर क्वेश्चन 24 acceptance must match the terms of offer without modification. Now come to question number 25. Question 25. What role does intention to create legal relation play in Harvey versus Facey decision? Okay. So it was assumed due to commercial nature of transaction. It was irrelevant since no valid offer was made. It was inferred from the parties' communication. It was explicitly stated in seller's telegram. So it is actually apanakara okay contract hi heini. So B would be the answer. It was irrelevant since no valid offer was made. Okay, valid offer hi kichi nathila. Okay, the so Facey je se kichi offer kar nathile ठीक अछि आउ जदि बा ये कहितले कि मु 6000 टंका रे जहाँ से कहले मिनिमम प्राइस जहाँ भी से कहले से मिनिमम प्राइस रे मु किनिबी से ताऊ किछि यस नो भी कहि नथिले ओके सो B would be the answer. It was irrelevant since no valid offer was made. Question 25. Now come to question 26. How does the Harvey versus Facey case clarify the difference between an offer and invitation to treat? An offer requires specific acceptance.
an invitation to treat does not. Okay, that is true. Offer acceptance of darkar, invitation of treat or specific acceptance darkar nahi. An invitation to treat is binding once price is communicated. No. An offer is made to multiple parties, invitation to treat is not. Seta bhi theek no. An offer is merely a suggestion while invitation to treat is binding. That is also wrong. A is correct. An offer requires specific acceptance and invitation to treat does not. Okay, so A would be the correct answer for 26. 27 question. Question number 27. Why did the court reject the argument that the seller's telegram implied a yes to the first question in buyer's initial telegram? Okay, so जोड़ा कि हार्वी को कया कथा कि से तो अग्री करथिले सेटा ना मिनिमम जोड़ा मु पचारथिले मिनिमम केते तो से मिनिमम अमाउंट दोचंदी माने से यस करचंदी कि हम सेल करबी. Okay, that was his thinking. The seller explicitly rejected the buyer's first question. Okay, सेटा है नटला. Seller only provided a response to the second question. First question मते किनिबार अछि. Okay, आउ तार मिनिमम प्राइस ता केते से किनिबार अछिटा ताको से आंसर करि नटले. The seller provided only a response to the second question. माने मिनिमम प्राइस ता केते. So that is correct. B will be the correct answer. The buyer's first question was irrelevant in the transaction. No. सेटा important question दिला मु किनिया पे जाउची से यदि लिख देता त यस मु बिकिया पे जाउची आउ तार मिनिमम ता रहइबो एति ताले कथा एटिके अलगा हितांदा. The buyer's telegram was unclear and ambiguous. So B would be the answer. 27 by the seller only provided a response to the second question. He was silent on the first question. Okay, B will be the answer for 27. Now come to question 28. So question 28. What principle of offer and acceptance does the Harvey versus Facey case reinforce? A statement of price constitutes a binding offer. No. Already I have dekhichu. An offer must be accepted within a specified time frame. That a reasonable time frame to accept haba darkar. Kintu ei case re taro kichi okay mane question hi asi natila in this particular case. An offer must show a clear intention to create legal relations. Acceptance can form a contract even if the offer is incomplete. Okay, Abitru C would be the most appropriate one. Right? An offer must show a clear intention to create legal relation. Joda Facey, okay, say ready nathile semti kichi konosi legal relationship re pasiba pai clear legal relationship. Right? So C would be the answer for 28. An offer must show a clear intention to create legal relations. 29. In Harvey versus Facey, why was the buyer's first telegram treated as a new offer rather than an acceptance? Okay, buyer जोड़ा कि Harvey करो last telegram. Okay, हम ready होची मुसेटा किनिबी. The buyer's telegram included conditions not present in seller's response. Buyer's telegram was ambiguous and unclear. The buyer's telegram was sent after the seller withdrew the offer. The seller's telegram did not constitute a valid offer to accept. Okay, सेटा offer ही नथिला, सेटा invitation to offer थिला. ये कहले कि तारा किनिया पे जाउची minimum price केते. से किनिया पे जाउची बिसरे किछि आंसर कलेनी minimum offer टा minimum price टा एति कहले. Okay, so D would be the answer. The seller's telegram did not constitute a valid offer to accept. Okay, that is question 29. Last question, a passage. What legal distinction did the court highlight between an inquiry and an offer? Okay, preliminary negotiation, inquiry. Okay, and an offer in Harvey versus Facey. So, court, what was court's observation? An inquiry must be accepted
to form a binding contract. An inquiry is not binding, whereas an offer demonstrates intent to create legal obligation. ठीक हो छेटा? An inquiry creates legal obligation on both parties. Not true. An inquiry is the same as an offer if it includes a price. That is also not true. So 30 by B is the correct answer. An inquiry is not binding, whereas an offer demonstrates intent to create legal obligation. Okay. So we'll take a break for 2 minutes. If you have any doubts regarding this, you can ask. Else we'll take a break for 2 minutes and then we will continue with passage number 4, 5, and 6.
Okay, now let us go to the fourth passage. Okay, so এই যে কেসটা এটা again same point উপরে আছে, that is the Pharma Society of Great Britain versus Goods Cash Chemists Southern Limited. Okay, so here again the question was based on the difference between offer and invitation to offer or invitation to treat. तर यदि in short ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ respondent जे ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି Goods Cash Chemist ତାଙ୍କର ଗୋଟେ chain of self service medicine stores थिला जोथिरे बेसिकली लोक जीव देखिबो सेटा को मेडिसिन तक दरकार से एमती हम शॉपिंग मॉल रे गो तो से निजे चूज कर दे से मेडिसिन को ताको नहीं कि काउंटर रे चेक आउट करिवे तो जो ताकर यूनियन थिला फार्मास्यूटिकल मेडिसिन्स रो ग्रेट ब्रिटेन रो से माने ऑब्जेक्शन कले केना से टाइम रे एटा के नुवा कांसेप्ट थिला लोक एथरे बहुत कम दरकार whereas जो ट्रेडिशनल मेडिसिन शॉप जेमती होची जोटी आपण जाई कि कहिबे आउ सी तापर आनी मेडिसिन ता दबो तो मैन पावर बेसी दरकार तो व्हाटएवर बी द केस एटा भलो चलतिला बी बिजनेस ता तेनु एमाने कोन कहले ना कंप्लेन कले कि हमरो जो स्टैट्यूटरी लॉज अछि ओके जो पॉइजन्स समथिंग एक्ट थिला तांकर तो अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट कि आपण को रजिस्टर्ड जे प्रैक्टिशनर अछि से ही देई परिबो आपण को मेडिसिन करिका रजिस्टर्ड मेडिसिन जो कि प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स को अर्थ जोड़ा कि डॉक्टर रे प्रेस्क्रिप्शन बिना से गुडा एमती ऑफ द शेल्फ देई हबन तेणु सेटा यू नो सेटा भूल और सेटा स्टैट्यूट को वायलेट करूछ तो ये जो देखौचंती मेडिसिन ओडा डिस्प्ले काउंटर रे एटा हला गोटे ऑफर whereas जे दुकानी रो कहया कथा ओके दिस गुड्स कैश केमिस्ट करो कि नहीं सेमिति नो जोड़ा हमें डिस्प्ले करूछु मेडिसिन ता सेटा हला इनविटेशन टू ट्रीट इनविटेशन टू ऑफर ताकू जने नै कि आसला परे से तरह सेति की जिंस किनिबो से सेटा हम जे कैशियर अछि ताकू दोछि सेटा से ऑफर ओके कैशियर ता परे ता कहूछि हां एटा पे करो जो देखुछि कि कोटा प्रेस्क्राइब मेडिसिन अछि माने प्रेस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन कहूछि कि प्रेस्क्रिप्शन दियो से सब हे सरला परे जेतबले कैशियर पेमेंट एक्सेप्ट करि सारुची सेटा हला एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट तापरे सेटू स्टार्ट हो कोर्ट को गला जिनसटा कोर्ट भी एग्री करले जहा ओके रेस्पोंडेंट कोच गुड्स कैश केमिस्ट जा कोच कोर्ट आल्सो एग्रीड विथ दैट तेनु in that background we have these questions question 31 ta dekhantu what was the central legal issue in Pharmaceutical Society of Great Britain versus Good Cash Chemists so whether the self service system constituted a breach of the Pharmacy and Poisons Act whether displaying goods on shelves amounted to an offer एटा ही सेंट्रल क्वेश्चन थिला से माने कहउतले जे जो फार्मास्यूटिकल यूनियन वाला कि सेटा हला हम देखौ जंती मेडिसिन उडा सेगुडा हला ऑफर एमाने कहया कथा सेटा ऑफर नो एटा इनविटेशन टू ट्रीट और इनविटेशन टू ऑफर whether the pharmacist supervision was mandatory for all sales whether dangerous drugs were sold without prescription so B would be the answer whether displaying goods on shelves amounted to offer so sethare quote कहले कि नहीं it did not amount to offer it amounted to invitation to offer or invitation to treat हला तो 31 टा मार्क करंतु okay B would be the answer now come to 32 at what point did the court determine that the sale occurred in goods cash chemist case okay तो को पॉइंट रे सेल टा एक्चुअली होतिला जहाँ से बूट कैंप कंपनी कहिला कोर्ट भी सेटा को एग्री करे कि से पेमेंट कला पर ठीक अछि सो when the customer picked up the item from the shelf no सेटा हला invitation to offer in the sense that सेटा से सिलेक्शन कला सेटा
when the customer approached the cashier with the item seta offer asi gala, when the cashier accepted payment and handed over the item seta hela apanଙ୍କର okay actual contract seti conclude hela when the pharmacist supervised the transaction seta ta aguru hei sarthile. So C is the answer, that is when the cashier accepted payment and handed over the item. So 32 raw C would be the answer. 33 ko asandu. What principle did the court establish regarding the nature of item displayed in self-service store? Items displayed constitute a binding offer. They displayed our invitation to treat. So it already to thare ame dekhi sarchu. Repetition is question na. 34 ko asandu. So question 34. Why did the court conclude that the self-service system did not violate the Pharmacy and Poisons Act? Because the pharmacist supervised all sales at the counter. Darkar nathila. Khali prescribed drugs jo guda thibo prescription drugs se guda supervise karibaro thila. Joth pe gote doctor the prescription darkar. Because the goods sold were not dangerous drugs. That is also not the case. Because the self-service system complied with all legal requirements. Because the customer did not have unrestricted access to poisons. So question Charla, why did the court conclude that self-service system did not violate Pharmacy and Poisons Act? Because the pharmacist supervised all sales at the counter. That would be the, but actually jodi apan dekhibe seta तार compliance रे कौन थिला कि जो Pharmacy और Poisons Act रे कि जते सब prescribed drugs अछि ओके जो drugs गुडा dangerous जो drugs पई दरकार आपनकर prescription of the doctor ओके से गुडा एंती खाल्टर आपन बिकी परिबेन तेणु ये जे pharmacist थिले ये देखुथिले सब गुडा कोन कोन जे लोक नउजो जो गुडा एते माने prescription drug नथिला सेडा सेंति से नै परिबे जोडा prescription drug थिला ता पई डॉक्टर रो prescription दरकार. Okay, so out of these A would be the most correct answer. 34 by A would be the most correct answer. Okay, so you can mark 34 A. Tapare 35 question. What does the boot cash chemist case illustrate about the role of cashier in contract formation? So cashier finally paisa accept kala pore he contract ta hoche padango. The cashier makes the offer to the customer. That is wrong. Customer is making the offer to the cashier. The cashier facilitates the acceptance of customer's offer. This is correct. The cashier supervises the entire transaction. No. The cashier validates the invitation to treat. That is also wrong. Okay, the supervisor je se seta dekhuchanti ki jo medicine ye chahunchandi se ta bitaru ki prescription drug achi ki nahi. Jodi prescription drug achi taku pacharchandi diyantu apana prescription drug. Okay, so supervision ra kama tara rochi kar pharmacist registered pharmacist. ठीक है. So in this case B would be the correct answer. 35 by okay, mark B as the correct answer. Now come to 36. How did the court interpret the phrase supervision of a pharmacist in the context of Pharmacy and Poisons Act? Okay, so question 36. Options supervision is mandatory only for dangerous drugs. सेमती नु आपण सब गुडा ही आपण सुपरवाइज कले ही जानिबे कोटा प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स गुडा नो. Supervision must be continuous throughout the shopping process, not necessary throughout the shopping process. काहे की supervision दरकार से तारो जा किनियर माने जहा चूज करिया कथा चूज करी के आनी कि दो तापर supervision ता स्टार्ट हो. Supervision occurs when the pharmacist authorizes the sale at the counter. This is correct. जहा चूज करिया कथा चूज करी कि कस्टमर जेतडा ऑफर कला ए 10टा मेडिसिन मु किनिबी सेति के बेले सुपरविजन टा स्टार्ट होची फार्मासिस्ट रो कि से 10टा ओके ता पई प्रिस्क्रिप्शन दरकार अछि कि राइट.
Supervision is required only during pricing and labeling. That is not the case. So C would be the correct answer in this case. Okay, so apai C ta apana mark karan. Okay, mark C as the correct answer for 36. Now come to 37. What impact did the Boots Cash chemist case have on understanding of invitation to treat? It expanded the definition to include verbal offers. It clarified that invitation to treat are not binding offers. Already it mein bahut gude question hai dekhi sir, so B would be correct. CDB dekhi diyantu. It allowed invitation to treat to be accepted without negotiation. That is wrong. It limited the applicability of invitation to treat to physical stores only. That is also wrong. Tapare asantu question number 38. So question 38. Why is the Boots Cash chemist case significant in modern retail practices? It prohibits self-service systems for regulated goods. That is not correct. It establishes the legal framework for contract formation in self-service stores. It restricts the role of pharmacist in retail settings. No. It eliminates the need for pharmacist supervision in regulated transactions. No. So Avitru, B would be the correct answer. 38. Okay, mark B as the correct answer. Okay, 38 B. Now come to 39. What principle regarding customer action did the Boots Cash chemist case establish? Customers' actions in self-service stores automatically concludes contract. No. Customers' action in selecting goods constitute an offer to buy. Okay. Display of the goods hela invitation to offer. ता भितरु चूज मु कली कोन मेडिसिन किनिबी कोन जिंस किनिबी सेटा हला ऑफर और ताको एतले मु काउंटर रे दोछि सेटा ऑफर टू बाय. So B will be correct. Customers' action in selecting goods and are equivalent to accepting the offer. Wrong. Customers' action in selecting goods create binding obligations on the store. That is also wrong. So only B would be correct. Okay. Customer action in selecting goods constitute an offer to buy. Right? Etala question 39. Now come to question number 40. Last question of this passage. What legal distinction between regulated and non-regulated good did the Boots Cash chemist and chemist case highlight? Okay, regulated goods require a separate contract for each sale. Wrong. Pharmacist supervision mandatory for regulated goods. Eta darkar. Regulated goods माने जो prescription drugs जहाँ पर doctor को prescription darkar. So B would be the correct answer. Okay, CODB देखिए दबा. Non-regulated goods cannot be sold in self-service stores, and regulated goods must be pre-approved by a licensing authority before sale. So B would be the correct answer for question 40. So 40 re B ta correct answer mark karantu. Pharmacist supervision is mandatory only for regulated goods. Okay, seta hala case number 4. Right. Now come to case number 5. That is Powell versus Lee. Short summary koi douchi. So it hala unauthorized acceptance ro contract law re. Okay, कौन consequences हुए. तो एथरे गोटे स्कूल बोर्ड थिला मिस्टर पावेल. तो से स्कूल बोर्ड गोटे प्रिंसिपल की वाइस प्रिंसिपल जॉब पे खोजुथिला लोकन को. तो मिस्टर पावेल सेथि पई पकैथिले तंग एप्लीकेशन टा. ओके, तो इनिशियल जे तंग तंगर जो मीटिंग हैला स्कूल बोर्ड रो सेतर से माने डिसाइड करले हां मिस्टर पावेल को दे दबा. किंतु सेटा कम्युनिकेट करा गलानी. से माने डिसाइड कर देथिले किंतु आ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस सेटा करा हलानी मिस्टर पावेल. ओके, तांको भितरु से जो बोर्ड भितरु गोटे बोर्ड मेंबर मिस्टर ली सी अनऑफिशियली तम कहि देले आपण सिलेक्ट हेजंती आपण को. ओके, यू विल बी द नेक्स्ट वाइस प्रिंसिपल जाबे. तो ये बाबू सेतबेले मिस्टर पावेल सी ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट रे थिले गोटे जगह रे चाकरी करथिले. ये जेमती हम कहै गला कि हां तुम पाइ जो
से चाकरी छाड़ी पळेले ओके जो चाकरी करथले ताको सेठी रेजिग्नेशन दे देले कि एटा मिली गला मते राइट तापर ड्यू टू सर्टेन रीजंस पुनी जेतले बोर्ड मीटिंग हैला से माने डिसाइड कले कि नहीं पावेल को दबानी आउ जण का को दबा तो ताको दे देले पावेल को मिललानी पावेल जेतले इनसले जानले ही स्यूट ली कि ये मते कहिथिले आउ ये मेंबर से स्कूल बोर्ड रो तेनु यू नो मते कंपनसेशन मिलो मते ही से पोस्टा मिलवा कथा ये जो ली मते जोटा कहिले कि मु पाई जाई छी सेटा हला एक्सेप्टेंस ठीक अछि मते से हिसाब रे मते फर्स्ट मु जोड़ा तांको ऑफर टा देथिली कि मु एप्लीकेशन टा सेरा एक्सेप्ट करथले ओके तो क्वेश्चन हला एबे बिफोर द कोर्ट कि मिस्टर ली जो अनऑफिशियली कहिले ई कथाटा तो सेटा ऑब्वियसली सेटा हला अनऑथराइज्ड ओके कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन जदि हबो ताले कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हे परिबो कि that was the central question of this case. So now come to question 41. In case of Powell versus Lee, what was the central legal issue addressed by the court? Okay, fundamental issue ta apanakara kon thila ei case re thik achi these are the options. Whether the school board had the authority to reject Powell's offer thik achi takara kahina se you know invitation for offer to same man deithile तांकर से पई they are having say offer to reject करिवे कि नहीं सर तांको पर डिपेंड कुछ whether the school board had the authority to reject Powell's offer सेटा central question नथिला whether the rejection of Powell's application was communicated effectively communication ही कराई नथला ठीक अछि किछि communicate दम कराई नथला कि हां आपण सिलेक्ट हे जनी official communication किछि नथला whether a binding contract existed due to improper communication of acceptance okay or whether Powell's application for the headmaster's position constituted a legally enforceable offer. So C would be the correct answer here. Whether a binding contract existed due to improper communication of acceptance. Mr. Lee, जे कि unauthorized थिले किछि formal communication करिया पे board तरफ रु okay से जो कहि देले तो does that bind the board or the school okay to give that particular post to Mr. Powell? कोर्ट डिसाइड कले कि ऑफर किछि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नथिला तो द क्वेश्चन ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कम्स इनटू प्ले बुझ परले सो 41 ओके योर आंसर विल बी सी तो सी टा मार्क करंतु 41 रो आंसर नाउ कम टू 42 व्हाई डिड द कोर्ट डिटरमाइन दैट there was no binding contract between Powell and the school board. So Powell's application was invalid. That is not correct. Rejection letter negated any potential contract. Rejection letter hi kichi diya hi natla dangu. Acceptance was not communicated by an authorized representative. This is correct. Okay. जो acceptance जहाँ भी से unofficially Lee कहले सेटा सीए Mr. Lee was not the authorized representative. Okay. The school board did not have the legal capacity to enter into contract. That is also wrong. The 42 answer is C. Now come to question 43. Question 43 dekhantu. What key principle of contract law does Powell versus Lee okay illustrate? The doctrine of promissory estoppel, the rule of counteroffer, the principle of communication of acceptance, the rule of revocation of offer. So C would be the answer. Principle of communication of acceptance. So C would be the answer for 43. Now come to 44. Why did the court reject the informal communication of acceptance to Powell? Okay, जो ली जो informally तांको कहिले सेटा court हिसाब रे सेटा proper communication okay काई की नुह it was communicated through an unauthorized individual. So that is correct. Mr. Lee was not authorized to give that information or to give that okay communication to Mr. Powell. Okay. It was not in writing. It was contradicted by rejection letter.
it did not include all terms of the agreement. So A would be the answer. 44 ro answer hela A. So please mark it 44A. 45%. What was the legal significance of the rejection letter received by Powell? It revoked a previously accepted offer. It clarified that school board's position regarding the application. It established that binding contract had been formed. It confirmed that Powell's application was invalid. So B would be the correct answer. It clarified the school board's position regarding the application. कि आपनकर application टा reject हे जाइची एई okay particular time रे. See, actually case रे कौन थिला कि initially से माने accept करथिले Mr. Powell join करि परियो, but से माने उसे किछि चिठी बिटी करना लगी किछि ताको officially communicate करना थिले Mr. Powell को. Okay, so Mr. Powell को ली कहिथिले unofficially हाँ तुमे select तो से निच्छ कोइ नथिले, but he was not authorized to say that. Right? 46 के असंतु. How does Powell versus Lee distinguish between an offer and acceptance? Okay, an offer must always be in writing while acceptance can be oral. Semti kichi nahi offer ta oral bhi paribo. Okay, it must be in words, either written or spoken. Okay, types of offer ame dekhichu au kon eta hela ame koilu express offer. ठीक अछि, clearly आपनकर offer टा हेतिबो. Okay, word रे हेतिबो, चाहे written word रे हेतो कि oral हेतो. Okay, आउ गोटे को टाइप ऑफर हे परिबो, implied offer हे परिबो कि impress offer हे परिबो. Okay, offer through conduct. Kichi kuha habani, kichi lekha habani, no words involved, but offer through conduct. Okay, anyway. So question hela, how does Powell versus Lee distinguish between offer and acceptance? An offer must always be in writing while acceptance can be oral. Leta bhul. An offer represents an intention to contract where acceptance finalizes the contract. This is correct. An offer requires explicit communication while acceptance can be implied. No, both offer and acceptance. Okay. आपनकर offer जिन देखलो हमें explicit भी है implied भी है. An offer can be revoked but acceptance cannot. सेमती किछि नहीं. Okay. Acceptance भी आपण ताकू revoke करि परिबे. ठीक अछि. जेमती हमें देखितलु से केस रे simultaneously आपनकर प्रथमे आपण accept करथिले टेलीग्राम रे पठेले कि चिठी रे पठेले तापर आपण रिजेक्ट करले टेलीग्राम रे पठेले. Acceptance और rejectance letter माने rejectance रो टेलीग्राम और acceptance रो लेटर सेम टाइम रे ठीक अछि ऑफरर को मिलिला. राइट, ताले कोन हो? सो दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ओके, एनीवे सेटा ए क्वेश्चन र नाही, तेनु एटा कोन हो आंसर. सो बी वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर 46. एन ऑफर represents an intention to contract while acceptance finalizes the contract. Which bale? So B is the answer for 46. Now come to 47. So question 47 ta dekhantu. What lesson about authorized representation in contract law does Powell versus Lee highlight? Unauthorized representatives can form binding contracts if they act in good faith. Communication from unauthorized individuals is irrelevant to contract formation. This is correct. Lee gote unauthorized okay individual thile to tanko adu communication asi kichi contract form hoban. So B would be correct. Authorized representation is not required for informal agreements. Unauthorized representatives can only communicate revocations, not acceptances. Okay, so B would be the correct answer for 47. 47 B को mark करो. 48 को आसंतु. Why did the court dismiss Powell's claim for breach of contract? Powell's offer was invalid under contract law. सेटा भूल, तांको offer valid थिला. There was no formal acceptance communicated to Powell. एटा हला बहुत important. Okay, so this is correct. B would be the correct answer. There was no formal acceptance communicated to Powell. Informal acceptance by unauthorized agent तांको communicate करा हितला जोटा कि okay से थरे contract आपण form हबन. Rejection letter constituted a revocation of contract. Revocation रो chance ही नहीं केना contract तो हे ही नथिला. Okay, the school board lacked the capacity to form contract. That is also wrong. Now come to
Question 49. So question 49 रे आपन पचारछि, what does Powell versus Lee teach about the role of mutual agreement in contract formation? So mutual agreement is not required for informal contracts. Mutual agreement must be explicitly communicated to be binding. Okay. आपण এই জিনিসটা এগ্রি কলে সে সেই জিনিসটা এগ্রি কলে সেটা explicitly communication হওয়া দরকার. Mutual agreement is assumed if one party accepts an offer. সেটা ভুল. Mutual agreement is irrelevant if an offer is accepted informal. So our only B would be correct. So 49, mark B as the answer. Now come to question 50. What is the significance of Powell versus Lee for doctrine of offer and acceptance? Okay, so Powell versus Lee, doctrine of offer and acceptance. So it eliminates the need for formal acceptance in employment contracts. The pura ulta koi dala. It underscores the necessity of authorized communication via valid acceptance. This is very important. So B would be the answer. It allows informal communication to override formal rejections. Wrong. It permits offers to be accepted by any representative of the offering. Okay, so Tavitru B will be the correct answer. Question 50, mark B as the correct answer. Okay, so it agala apanakara question number ki case number 5. Okay, Powell versus Lee. Last passage ki last case law jota main dekhiba. Okay, that is Feldhaus versus Bindley. So our short re kochi Feldhaus. You know, he was a kind of sort of businessman thile. Okay, and tankar gote nephew thile, tankar bada farm house thila. Farm house re bahut gude ghoda and other animals and other things were there. The farm house re bahut gude auction hotila. Auction mane jo kina bika hotila. Okay, so normally jo lokota auction karutila Bindley. Okay, so the auction manager se thila. तो Feldhaus से गोटे घोड़ा तांकु किनिबार थिला. तांका नेफ्यू को लिखि देले कि ए घोड़ाटा मते किनिबार अछि, एति टंका मु देबी. आ जदी आपण आउ किछि कम्युनिकेशन मते न कले आ विषय रे ताले मु जानली कि घोड़ाटा मोर, आपण मते घोड़ाटा दे देले. ओके, तो तांका नेफ्यू कर भी इंटेंशन से थिला कि तांकर जे अंकल अछंती तांकु ही बिकिबे घोड़ाटा, किंतु सिए ताको फॉर्मली कम्युनिकेट कले लेखि कि पठेलेनी कि हां आपण को पई घोड़ाटा रखि आपण को ही बिकिबे सेटा से कहले. But intention से थिला. Later in the case, he told that I intended to sell it to my uncle. Okay, intended to sell it to Feldhaus. ता भीतर कोन हला ना से जो तांकर ऑक्शन मैनेजर थिला बिंडले, तो गोटे ऑक्शन बेले से आउ जानना कि घोड़ाटा रखाई जे एथि काम पई से भाबिले घोड़ा भी ऑक्शन हो, घोड़ा को भी से बिकि देले जण. ए कथाटा एतले Feldhaus जानिले से केस कले ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रो. काहे कि ना Feldhaus को कहया कथा कि सेटा मो प्रॉपर्टी, तुमे मो प्रॉपर्टी केमति बिकि देलो. ठीक है. So this was Feldhaus versus Bindley. तो कोर्ट को अगर क्वेश्चन थिला एटा हमें कोठी कोर्ट करूछु ए केस लटा साइलेंस इन एक्सेप्टेंस. जदि मु साइलेंट रहिली सेटा को एक्सेप्टेंस मना जाय परिबो की. ओके, दैट इज बेसिकली व्हाट दिस केस टेल्स अपॉन. हेलो 51 टा देखंतु. What was the central issue in Feldhaus versus Bindley regarding transfer of ownership of the horse? Okay, so already mo apun कहली एते मेनली कोन ना जदी एक्सेप्टेंस ता क्लियरली आपण न जणैबे ताले सेटा वैलिड होबनी. साइलेंस ता आपणकर ओके एक्सेप्टेंस इन लिeu of acceptance, silence cannot be valid. Whether the auctioneer had the authority to sell the horse, whether the plaintiff had a valid agreement to claim ownership of the horse, whether the nephew communicated acceptance to plaintiff's offer, whether the sale violated the statute of frauds. So आरो ए सब ता भितरु प्रतिनता तो पूरा डायरेक्टली लिंक्ड अछि, किंतु सेंट्रल कंपोनेंट कोटा थिला ना whether the plaintiff had a valid agreement to claim ownership of the horse. से कहले मो प्रॉपर्टी बिकि देलो, सेटा प्रॉपर्टी आपन को हेला केमती. आपण एटा भाबी दैछंती कि मु ताको चिठी लिखिछि, चिठी रे भी लिखि दैछि जतु मते किछ कहबनी आ विषय रे एतिक दिन भितरे कि मते कहबनी किछ, ता माने मु भाबिली कि एटा ओके मोर घोड़ा हे गला. सो
that is against the basic principles of a contract. Okay, जदि सीए एक्सेप्ट करके लिखिला हाँ जदि मु आउ 3 दिन भीतर आपन किछि न कहूची ताले मु घोड़ा आपन देली. ओके बट सेमती किछि हे नथला. नेफ्यू जी से किछि भी रिप्लाई करनी एक्सेप्ट करनी एक्सेप्टेंस ता तांकर क्लियरली इंप्लाई करनी. सो बी वुड बी द आंसर फॉर 51. whether the plaintiff had a valid agreement to claim ownership of the horse. एठी देखंतु गोटे क्लैट पीजी रो गोटे जिंस हला आउ जते भी आउ भी केते केते पीएससीज गरिका क्लैट पीजी अपन कोन पई दउछन. ओके बहुत कम पिला एनएलयू गरिका रे पढिया पे सेटा दियंती बेसिकली नेशनल यूनिवर्सिटीज रे मैक्सिमम जते टॉप जते अपन मार्क सब आसे से माने बेसिकली पीएससीज रे ओके तांकर पोस्टिंग जंती आपनकर डिफरेंट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हे गला सेति पे दियन. तो सेथरे कोन होबो ना आपनकर जो ऑप्शंस उडा से बहुत क्लोज रहइबो कंफ्यूजिंग रहइबो. तो आपण यदि कॉन्सेप्चुअली क्लियर ना आंती आपण लागिबो ए दीटा की तीनटा ऑप्शन तो सेम ही अछि. राइट. सो बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन 51. ताको बी मार्क करंतु. नाउ कम टू क्वेश्चन 52. क्वेश्चन 52 को आसंतु. सो क्वेश्चन 52 कोन कोची. Why did the court rule the letter dated February 27, 1861 inadmissible as evidence? It was not signed by the defendant. It did not demonstrate a clear agreement to transfer ownership. It violated the rules of admissibility under statute of frauds. It was sent after sale of the horse had occurred. So B will be the correct answer. It did not demonstrate a clear agreement to transfer ownership. Okay. कि हाँ घोड़ाटा आपणकर हैला सेटा क्लियरली ओके सेथरे मेंशन हे नथला. सो 52 बी मार्क करंतु. हां कोंतु से ताले सबु केस पढला बेले तार इश्यूज एंड ऑल पूरा डिटेल रे पढिया को पड़िबो ना. तेना जदी डिटेल रे न पढचे खाली समरी पढुचे देन तार तो ऑप्शन सब सिमिलर लागिबो. हां माने देखंतु केते गुडे केस लो अछि. Is it possible कि हमें सबु केस लो रो डिटेल एनालिसिस कर परिबा जोगुडा की बहुत इंपोर्टेंट केसेस अछि जेमति कि एई जो आपनकर एक्सेप्टेंस ओके आउ ऑफर एई दीटा रे एई 8टी केस ही मोस्ट इंपोर्टेंट जोटा हमें डिस्कस करलु ता भीतर जे अभी आपन को पड़ जाय पारे. राइट. सी क्लैट पीजी स्पेसिफिकली मु कहबी तारो जदी आपन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देखिबे 10टा क्वेश्चन रो 3टा क्वेश्चन डायरेक्ट और बहुत इजी फ्रॉम द पैसेज पड़े तापई लीगल रीजनिंग दरकार नहीं. इफ यू इवन डू नॉट नो लॉ से तीनटा आपण आराम रे कर दे परिबे क्वेश्चन. तापर आसिला नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस दे आर एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर केस. ताले से केस ता मते टिके जानिबार अछि. ओके फंडामेंटल कांसेप्ट्स एंती एटी कॉन्ट्रैक्ट रो से फंडामेंटल कांसेप्ट्स ऊपर क्वेश्चन थिबो. आउ तीनटा पूरा डिटेल्स रे से पर्टिकुलर केस लो ऊपर थिबो. सेटा जदि मु केस लो जानि नि प्राय मु सेगुडा अटेम्प्ट करि परिबेनी. आ से जो टॉप मार्क्स जो आसे क्लैट पीजी रे जो माने लाइक आईओसीएल की अलगा कोड आपण पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपण जिबे तो सेति पे आपण इंटरेस्टेड अछंदी तो सेही मार्क ता को डिटरमाइन करिया पे से माने से टाइप रो क्वेश्चन देथान. ओके जस्ट टू नहले नॉर्मली हमें जदि बेसिक्स पढी के गलु ताले 10टा ईच पैसेज रो 10टा भितरु एटलीस्ट तो 6-7टा मु कर दे परिबी. बट 10टा रु 10टा कि 10टा रु 9टा करिया पई हां मते टिके तार इंपोर्टेंट केस लॉज रो डिटेल्स रो जानिया पे पड़िबो. आ एबे जा पैटर्न रहिछि लास्ट विगत 2 वर्ष आपण जदि देखिबे लैंडमार्क केसेस छडा अलगा एंसिलरी केसेस भी पकोछि जोटा कि असंभव कि हम ताको पढी कि जाइथिबा. हां एई केस रो पके देला हम एटा पढी कि जाइछु हम जानिछु बट सबु केस सेमती तो हमें पढ़ी परिबानी ना. तो सेति पई आपण लीगल रीजनिंग आपण को यूज करिवे. ठीक अछि यू यूज योर लीगल रीजनिंग जोडा 10टा भितर जतिकटा डायरेक्टली होची जोडा होनी विदाउट गेसिंग काहेना 0.25 मार्क्स आपण को कटि जीव भूल हेले तो सेटा को देखि कि आपण अटेम्प्ट करिवार अछि. ओके सर ठीक. ओके यस ठीक अछि. तो 52 गला. नाउ कम टू 53. What principle of contract law does Feldhaus versus Bindley emphasize regarding
साइलेंस एज एक्सेप्टेंस एटा ही एक्चुअली तार जो माने ओजेएस रे कॉन्ट्रैक्ट नहीं चंती ओके एज योर ऑप्शनल तो साइलेंस एज एक्सेप्टेंस रे ए केस टा आपन को दबार अछि राइट तो एटा कोन हम जानलु कि साइलेंस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज एक्सेप्टेंस silence can be treated as acceptance in specific circumstances that is wrong silence is always considered acceptance if no objections is raised that is also wrong silence cannot constitute acceptance unless explicitly agreed upon by the parties okay so this would be correct now suppose ताको नेफ्यू रिटर्न रे लिखि दांदा ठीक अछि अंकल मु जदी आउ 3 दिन भितरे कि 3 कि 10 दिन भितरे आपन को किछि रिप्लाई करूनी ता माने हैला मु आपन को सेल करि देली ठीक अछि ताले ये विषय लिखि पठे दिले मु एतिक दिन भितर जदी किछि रिप्लाई न करियो मु भाबी भी सेटा मोर ये जदी सेटा यस कर दे दांदा ठीक अछि सेतिक दिन भितर मु जदी आपन को मना न करछि कि अलगा किछि कम्युनिकेट न करछि ताले आपन को ताले एई केस रे कोन हितांता ना सेटा एक्सेप्टेंस हे जेता okay but see kichi कहले नहीं it was complete silence so silence cannot constitute acceptance unless explicitly agreed by both the parties have to agree that if there is silence it means acceptance in this case the offerer okay सी से कहउछन कि एतिक दिन भीतर न मिलले मु भाबी भी घोड़ा मोर किंतु ऑफर ही किछि कहलेन ताका नेफ्यू किछि कहलेन okay so C would be the correct answer 53 by mark C as the correct answer तापरे 54% how did the court interpret the relation between plaintiff and the nephew in the sale of the horse the nephew acted as an agent for the plaintiff that is not the case the nephew and plaintiff had valid agreement to transfer ownership nahi kahi na to acceptance hi nathila the plaintiff's claim to ownership relied on unclear and incomplete communication which is correct unclear communication incomplete communication so C would be the correct answer the plaintiff invoked the offer before the sale was finalized okay so by C would be the answer 54 mark C as the answer okay C would be the answer question 55 the key legal precedent what key legal precedent did the court refer to in Feldhaus versus Bindley एटा टिके बहुत ही फैक्चुअल हे जिवो आपण जदी देखंतु येटा दर पैसेज टाको ठीक अछि तो सो पैसेज रे ही से you can see the court referred to the case law precedent in Smith versus Neil ठीक अछि सेठी डायरेक्टली दे दैछि ओके तो बहुत गुडे क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू क्लैट पीजी रे कोन हबो ना दी तीनटा क्वेश्चन पैसेज रु सीधा आसे ता पई लीगल रीजनिंग सेमिति कहउ गले हमरो एते किछि दरकार होएनी ठीक अछि माने ताको हमें कहि परिबा इट इज काइंड ऑफ इजी काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओके सो स्मिथ वर्सेस नील दैट इज बी वुड बी द करेक्ट आंसर डायरेक्टली सेटा देइछि मते ता पई मन रखिया पडिबनी कि जजमेंट ता कोन थिला ठीक अछि तो से जो एक्सट्रैक्ट देथिबो जजमेंट रो ऑपरेटिव पार्ट रो सेथरे ही सेटा अछि सो डी वुड बी द आंसर okay that is there in the passage 56 question though what role did the auctioneer play in Feldhaus versus Bindley ठीक अछि जैसे ऑक्शनर जे तार नेफ्यू गर सबले ऑक्शन करथला ऑक्शन मैनेजर he was basically innocent in the sense that सी जाननी कि घोड़ाटा लखाई छडा सेल पे नो okay so by mistake he sold it the auctioneer mistakenly sold the horse to third party the auctioneer acted as an agent for nephew in transferring ownership the auctioneer facilitated the sale of horse under unclear ownership conditions the auctioneer refused to acknowledge the plaintiff's claim to the horse auctioneer जानी नथिला कि सेटा बिकिवार नै okay so से भूल रे ताकू बिकि दैछि so A would be the correct answer the auctioneer mistakenly sold the horse to third party तापरे next question 57% okay why was the plaintiff unable to establish ownership of the horse in Feldhaus versus Bindley the plaintiff failed to make valid offer to purchase the horse offer valid thila
ठीक अछि जो कहले कि एति टंका पई मु किनिबि जदि तुमे किछि न कहउछो त माने मु भाबिली हॉर्स मोर the nephew never explicitly accepted the plaintiff's offer so this was the issue B is the correct answer CDB देखि दियंतो auctioneer sold the horse before the agreement was finalized the plaintiff did not provide sufficient evidence under the statute of frauds so B would be the answer 57 okay mark B as the answer तापरे 58 के असंदु what was the legal significance of nephew's communication in Feltout versus Bentley it constituted a counter offer that the plaintiff rejected legal significance of the nephew's communication okay it was insufficient to establish a binding agreement it confirmed the plaintiff's ownership of horse it revoked the plaintiff's offer to purchase the horse okay so obviously abhitru B is the correct answer it was insufficient to establish a binding agreement because he was silent okay so kichi kahileni right 59 ke asantu how does Feldhaus versus Bindley reinforce the requirements of statute of frauds okay so question 59 these are the options given to you prathama A re kochi agreements must be in writing and signed by all parties involved agreements must include explicit terms and mutual consent verbal agreements are invalid under all circumstances ownership cannot transfer without involvement of third party witness abhitru B would be the most appropriate agreements must include explicit terms and mutual consent explicit terms and mutual ambiguity kichi roiba katha no so mark B as the answer for 59 last question that is what precedent does Feldhaus versus Bindley establish for contract law so silence cannot constitute acceptance unless explicitly agreed upon eta taro central issue ta jota ame dekhidilu okay so that is correct silence okay cannot be termed as acceptance unless gotti exception hai both parties agree to it offers must always be in writing to be valid not necessarily ownership can transfer based on implied agreements okay third party action cannot override verbal agreement okay that is also abhitru kaya gale contract law by important ଜିନିଷଟା କଣ silence cannot constitute acceptance unless explicitly agreed on ଠିକ ଅଛି ତ ଏ 60 ଟା क्वेश्चंस ରୁ if you are getting 45 plus ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ କନସେପ୍ଟ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ତାଠୁ ଯଦି ତଳେ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ଥରେ ଟିକେ theory ଗୁଡା ପଢିବେ ଠିକ ଅଛି if you are getting more than 50 very good ବହୁତ ହି ଭଲ then you are around striking distance okay but clat pg re if you are aiming to get a good NLU tale thik achi tike episode chal jibo but if you are planning for public sector enterprises bahut high score apan ko rakhiya padibo seita mind re rakhi ki chalibe okay clat pg ro so fine then we will stop here okay aar jodi au kon kichi doubts achi you can ask else you can WhatsApp me okay जहाँ भी पढ़ुचंदी टिके टाइम नहीं की पढ़ंतु जल्दी जल्दी सब सार देबी सेंती भाबंतनी आपनकर डिपेंडिंग ऑन द रिगर ऑफ योर एग्जाम आपन एग्जाम रो डिमांड हिसाब रे रिटन एग्जाम्स फॉर जुडिशियल सर्विसेज पई 12 रु 18 मास प्रिपरेशन दरकार ठीक अछि अपन देखिए के जण कहते मु 6 मास पढ़ली मोर हे गला बहुत सेटा एक्सेप्शनल केसेस ठीक अछि exceptional cases normally it will take around 12 to 18 months to complete judiciary syllabus ठीक सेमती आपनकर clat pg AIB ए टाइप रो एग्जाम्स पई ओके clat pg in particular tough exams जोड़ा MCQ based आपनकर एटलीस्ट जदि आपन गोटे स्टैट्यूट की गोटे मास रे दीटा स्टैट्यूट प्रॉपर्ली सॉल्व ताले आपन को 6 मास 8 मास खंडे लागियो सेटा कंप्लीट करिया सो क्लैट पीजी ए वर्ष जो मान देबे 2026 आपन को डिसेंबर 2025 रे परीक्षा होबो सो सफिशिएंट टाइम इज देयर आमे तो गोटे गोटे पार्ट सारिले एमती तार टेस्ट करिके आमे करिया बट लेट्स से बाय अगस्त आपन को टोटल कोर्स ता माने अगस्त 2025 इट्स अ 1 ईयर कोर्स अगस्त रे आपन को कोर्स कंप्लीट हे जेथिबो सो बाय देन अगस्त गले सितंबर अक्टोबर नवंबर 3 मंथ्स ओनली टेस्ट सीरीज आपन करि परियो सो बाय द टाइम यू गिव द एग्जाम
you will be fully prepared. ठीक है? Any questions you would like to ask, then you can ask, else we will stop. Okay? And tomorrow you will meet and बाकी जोड़ा. बोल. सर जो हमरो स्टडी मटेरियल टा आसंता क्लास रो स्टार्ट होबार 7 दिन पहले स्टडी मटेरियल टा आपनकर ऑलरेडी आसी गलानी. ओके आपण मैम को कॉल कर देबे, मैम डेट देबे, आसी कलेक्ट कर. क्लास पीजी ପାଇଁ स्टडी मटेरियल. ओके सर ठीक है. ओके ठीक. ओके थैंक यू. थैंक यू.